सुशीर यार, आज सुबह 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 उठा मैं ट्विटर पे, मैं खतरनाक, मैं कहा फक, सुशीर ने ट्वीट डाला है कि उसके ब्रॉड आईपी के आईएसपी ने स्टीम को ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा होली शिट। मैंने वैसे यहाँ के लोकल आईएसपीस को देखा है विदाउट वीपीएन, काफी सारे टॉरेंट साइट्स एंड ऑल आर ब्लॉक्ड, एंड ऑफ कोर्स आई यूज टॉरेंट्स ओनली टू डाउनलोड लिनक्स वेरी रेगुलरली ऑन माय ऑफिस लैपटॉप। और कुछ करूंगा क्या मैं? बट टॉरेंट साइट जैसे मैंने देखा वीपीएन से ही खुलता है, तो मुझे लगा लाइक फक, हैज इट कम टू दिस? थोड़ा सुनने को आ रहा था। सुशील, व्हाट हैपेंड? लाइक हुआ क्या एंड फाइनली हो क्या रहा है? तो फाइनली अभी जो बात चल रही है कि नहीं, पहले स्टार्टिंग से बताते हुए आई मीन तो फिर थोड़ा अच्छा बैकग्राउंड मिलेगा फॉर द पीपल हु डोंट नो। आई वेंट आउट टू स्लीप लास्ट नाइट एट अराउंड 1:30 आफ्टर प्लेइंग अ राउंड ऑफ सीएसगो। खेल के मजा आया बहुत। वो भी एक किस्सा है पर वो बाद में बताऊंगा। ठीक है। अरे मैंने कुछ दिन पहले सुशील तेरा मैसेज देखा था ग्रुप पे जो तूने डिलीट किया। yeah. So that is it's very indicative of what was going on at that point of time. So तो किसी को घर पे घुस के मारने की धमकी दी। या रोहन को चल रही थी, यही पे बोल रहा हूँ। तो खेल के हम लोग सोने चले गए सब। फिर रात में करीब 3:30-4 बजे एक दोस्त का मैसेज आता है, कैलकाटा ही का है। वो भी, उसके पास भी सेम आईएसपी है, अलायंस ब्रॉडबैंड नाम है। मेरे घर के बगल ही उन लोग का मेन ऑफिस है। तो उसका मैसेज आता है कि स्टीम नहीं चल रहा है। तो मैं नींद में था, तो मैं देख के बोला अच्छा ठीक है, नहीं चल रहा होगा, शायद कोई रूटीन मेंटेनेंस या वैसा होगा। तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजता है, दिखाता है वहाँ पे लिखा हुआ है कि एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव दिस वेबसाइट हैज बीन ब्लॉक्ड। तो मैं थोड़ा हंसी रहा हूँ मन में, थोड़ा अंदर से थोड़ा मतलब इट इज स्टमक इज फॉलिंग, ठीक है, फीलिंग आ रहा, फिर भी थोड़ा हंस के मैं सो गया। घंटे भर बाद फिर भी नींद नहीं आ रही है, स्क्रॉल कर रहा हूँ सीएसगो इंडिया कम्युनिटी ग्रुप में, देख रहा हूँ कि समवन हैज पोस्टेड द सेम थिंग, सेम स्क्रीनशॉट, और दैट द गाय इज लाइक अ ट्रेडर, अ प्रोलिफिक ट्रेडर, स्किन्स केसेस वेसेस, वहाँ काफी ट्रेडिंग करता है। ये बहुत सारा वेबसाइट्स है जिन लोग का नाम मुझे भी नहीं पता, तो वो सब में ट्रेडिंग भी करता है। तो वो लिखा है कि रेस्ट इन पीस टीम, ऐसे करके डाल दिया है। तो मैं उसको मैसेज किया, मैं बोला क्या हुआ भाई? तो बोल रहा है कि नहीं, अलायंस ब्लॉक कर दिया है, दूसरे आईएसपी भी सब ब्लॉक कर देंगे। तो मैं थोड़ा डर गया, मैं बोला भाई मेरा एक ही प्लेटफॉर्म है गेमिंग का, स्टीम, अगर स्टीम नहीं रहा तो एपिक में गेम खेलना पड़ेगा। ये तो मैंने सोचा ही है। मैं तो सीधा सोचा था पायरेसी करना पड़ेगा क्या? एपिक तो माइंड में ही नहीं आया था, मुझे लगा एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये नहीं सोचा 500 गेम का लाइब्रेरी गायब। I think what is the future? अरे वैसे सुशील, just one thing, like you're also putting it this way ना कि you had a sinking feeling in your stomach वाला वो, कि ना मतलब it didn't make, when सुशील ने बताया it didn't make sense। मतलब एक I was like यार 70-75% यार for this to be true, like मैं न्यूज से पहले सुनता कुछ होता, then ऐसे ना like कुछ होता, मतलब because so many purchases are attached to it. This is like लोगों का पैसा इन्वेस्टेड है, नॉट गैम्बलिंग है ना, प्रोडक्ट खरीदा है कुछ ना। वैसे तो आई मीन सेम इन, वैसे अब देखो तो पबजी में भी काफी पूरा इंडस्ट्री वैसे बन चुका था। तो लेकिन उस वे में मतलब नॉट सेइंग कि ना लाइक मैं सिर्फ इस वाले गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा हूँ फॉर एवरीथिंग रॉन्ग, बट ना लाइक दिस इज द टाइम व्हेन यू आर लाइक नॉट 25% डाउट, 20-25% एक डाउट है कि ना यार ये हो भी सकता है, मतलब दिस कुड बी अ स्टार्टिंग ऑफ समथिंग। And that is what got me like really affected, because 5 बजे मैं जब उठ के चेक करने गया खुद से कि मेरा भी सेम पेज आ रहा है कि नहीं, तो मैं पहली बार में तो स्टोर खोला, तो देखा स्टोर तो आ रहा है, तो मैं हंस रहा हूँ कि कुछ और प्रॉब्लम होगा किसी का, मेरा क्या आ रहा जा रहा है। एंड देन आई डिसाइडेड टू गो चेक ऑन माई इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री में लास्ट ही हफ्ते एक केस मिला है, 50-60 रुपए दाम है, एंड आई वाज लाइक देख लेता हूँ केस ठीक है कि नहीं, एंड आई क्लिक ऑन दैट एंड आई गेट द सेम पेज एंड आई एम लाइक I lost it, and I'm like, what? And the thing is that the store, Steam store has a different URL, and your community profile, inventory, market, everything has a Steam community URL. So I got really scared, and I was like, you know, अब तो you know Epic तो मतलब ठीक है, Epic तो piracy भी से भी बुरा सपना है. So I'm like कि अभी क्या करूँगा? And
मैं देख के मैं सुबह के 5 बजे ट्विटर में डालता हूँ कि this thing has happened, and it was a very innocuous tweet in the sense that I'm just saying this has happened, the ISP is saying this, is anybody else facing this or not, like what is the thing, like is it really getting banned? Because I remembered like कुछ दिन पहले ही 3-4 दिन पहले the ministry department they were talking about banning mobile online games and stuff like that, betting, gambling, ये वो अचानक से लॉर्ड गेवन के ऊपर अटैक करना ऐसे करके तो मतलब मेरे तो होश ही उड़ गए थे, and I just went off to sleep after that, and I wake up at 9 in the morning, and then I'm off to work, and in the middle I'm seeing that this is getting blowing up, and many of my friends who are locally situated, they have messaged me regarding that. It's a decent service provider, but they're always like known to be quite quick to block websites which the government asks it to. So the thing is that सबसे पहले PUBG वाला जो ये हुआ था, तो वो लोग प्ले स्टोर में आने के पहले मतलब उन लोग ही ऐसा कुछ ब्लॉक करने का सोच रहे थे, ऐसा कुछ, एंड the other websites which we used to visit, मतलब मैं नाम नहीं बोलने मांग रहा हूँ, हाँ, एनिमे वाले, दूसरे वाले, whatever kind of websites जो थे, आदमी लोग all these different hubs on the internet that people would visit, where people will congregate and stuff like that, they were pretty quick to ban all of that, ठीक है, so like दूसरे लोग का 1-2 दिन बाद हुआ, इसका पहले हो जाता था. Yeah, अभी भी banned है क्या? क्या? The sites that you're talking about? Yeah. Oh yeah? Yeah. Oh shit. I thought it was only a UP thing. No, not really. It's not. Okay. Chalo, India is so much better वैसे हैं after that ban. I think so. Yeah. I think safer so. also for women. Safer. Yeah, I also feel safer personally. मुझे भी safe लगता है. I don't try to assault myself. So. And also, it's so nice. People haven't found any alternatives also. Yeah. लोग सुधर गए. I mean, किसी को कुछ नहीं मिला है. हाँ. I mean, I can vouch for that. People are praying and all more. And then I see the thing blowing up. Someone tweeted it to Rishi, and then Rishi got on it, and I was like, yes, एक champion है. I deserve a champion. ठीक है. So he checked it all out, and even though उनके service provider में सब आ रहा था, and Steam user access हो रहा था, he still took this thing up, and he tweeted a lot about it. I was very concerned because many people started like there were both sides to it. Like one side तो मतलब एकदम ये क्या हो रहा है, ये चाइना बन रहा है क्या, this and that, and I was getting scared क्योंकि मेरा retweet पे वो सब हो रहा है. So मेरी फट रही है, मेरी ऐसी भी थोड़ी कम में फट जाती है. So पुलिस आ जाएगी अब. पुलिस, and I'm worried. And on the other hand, I am getting WhatsApp messages from some people, and Facebook messages saying I'm lying, and I'm like, अरे भाई मेरे को क्या मिलेगा इससे, मेरे को क्या मिलेगा, झूठ बात बोल के मेरे 2000 गेम में स्टीम में मेरे लॉक हो जाएंगे और मैं नहीं खेल पाऊंगा. what will be the point of it? If you want to know अगर वो सच है कि नहीं है ना, अगर वो झूठ होगा ना, he would advertise हमारा podcast वहाँ पे. Right. नाम लिखा हो रहेगा उसमें कि गेम presents प्रेस स्टार्ट टू प्ले, ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया में ब्लॉक हो चुका है. Then that, I mean, तुम लोग सोच सकते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि वैसे मैं बोलता हूँ वैसे बहुत. तो I was like यार मैं तो बस कंप्लेन किया, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, तुम्हारा शायद आईएसपी में आ रहा होगा, मेरा नहीं आ रहा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. And then the thread on the CS:GO India community also went up, and other people also, some people wrote an article about it, AFK Gaming, and I think Talk Esports वाले थोड़े retweet भी किए, and then there was a lot of eyeballs. उसके बीच में मेरे को ऑफिस में 3-4 बार कॉल आ रहा है. पहली बार कॉल आया 11 बजे है, IT सेल IT सेल ऑफ अलायंस ब्रॉडबैंड. तो उन लोग फोन करके मेरे को बोलते हैं कि हाँ, वी आर फॉलोइंग अप ऑन दैट, ब्लॉक ही हुआ है, गवर्नमेंट ही का डायरेक्टिव है, हम लोग रीजन बता देंगे. तो मैं बोला कि मैं ईमेल भी किया हूँ, मेरे को डायरेक्टिव क्या है जरा जस्ट सेंड इट टू अस. तो पहली बार जिससे बात हुआ था वो बोला था ये कॉन्फिडेंशियल है. तो मैं बोला कॉन्फिडेंशियल मतलब कॉन्फिडेंशियल तो नहीं होना चाहिए, ये तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. फिर बोला हाँ ठीक है मैं देखता हूँ, आप ईमेल कर दीजिए. मैं ईमेल कर दिया. मैं बोला कोई बात नहीं, इंडिया है, थोड़ा रूल्स फॉलो करना चाहिए. मैंने ईमेल कर दिया.
तो ईमेल ईमेल करने के बाद फिर कॉल वॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं ये डायरेक्टिव तो ठीक है, हम लोग फॉलो अप भी कर रहे हैं, अगर कुछ आया तो हम लोग बताते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा बात है। उसके बाद थर्ड वाला बात करता है, फोन करता है, एंड आई वाज रियली हैप्पी विद दैट गाय बिकॉज ही न्यू द डिफरेंस बिटवीन स्टीम स्टोर एंड स्टीम कम्युनिटी। एंड आई थिंक आई मीन खुद एक गेमर होगा, मैं खुद एक गेमर हूँ वाला टाइप होगा कि वो समझता है वो डिफरेंस। और वो बोला कि हाँ वो है, एंड कुछ इंटरनल है चल रहा है, आई थिंक वी नीड टू फिगर आउट व्हाट द डायरेक्टिव सेज एंड स्टफ लाइक दैट। तो मैं फिर भी उससे बोला, थोड़ा अपील किया कि अरे डायरेक्टिव जरा आई मीन मसाला थोड़ा ज्यादा फॉरवर्ड। तो बोला कि नहीं अभी तो नहीं कर सकते, ये वो करके डाल दिया। बोला हम लोग बात करते हैं कुछ देर बाद। तो उसके बाद मैं देखा संपत, ट्विटर में संपत है, वो भी सेम नाव पे है, उसका भी इंटरनेट गया हुआ है। पहले वो भी सोच रहा था कि स्टीम रहेगा, अमर रहेगा एंड स्टफ लाइक दैट, एंड डिड नॉट हैपन। तो वो भी मैसेज कर रहा है कि अरे मेरे को बोला कि वैसा कुछ बात नहीं है, उन लोग से कुछ गलती हुई है। इस टाइम में अच्छा लग रहा है थोड़ा अंदर अंदर तक। 4 बजे 4:30 बजे दिन के मैं काम कर रहा हूँ, फिर से आता है मैसेज, फिर से कॉल आता है कि हाँ इट्स बीन सॉर्टेड, आप ही ने क्या कंप्लेन किया था? मतलब हाँ मेरा कंप्लेन बोले नहीं ऑनलाइन, एंड आई एम लाइक स्टिल अनअवेयर, एंड आई एम लाइक नहीं नहीं मैंने कहा, आदमी लोग तो कंप्लेन कर ही रहे। बोला हाँ बहुत कंप्लेन आ रहे थे सुबह से एंड स्टफ लाइक दैट, एंड आई एम लाइक थैंक गॉड people are utilizing their internet for good stuff. Not only the hubs, people are also making it to Steam and stuff like that, and buying games or playing free to play games, whichever. But तो उसके बाद संपत को भी मैंने मैसेज किया, संपत checked it out and the thing worked, and now it's okay, but they have left it on a very like a vague note, क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया, क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया है कि वी आर स्टिल ट्राइंग टू क्या बोलते हैं वो जो डायरेक्टिव है, वी आर स्टिल ट्राइंग टू वेरीफाई द डायरेक्टिव एंड स्टफ लाइक दैट, एंड आई डिड नॉट नो व्हाट दैट वाज अबाउट। क्योंकि अगर डायरेक्टिव है तो क्लियरली बताना चाहिए कि क्या डायरेक्टिव है, अगर है तो तुम्ही को सिर्फ मिला है या किसी और को भी मिला है। आई मीन कोई चीज का लेके कोई मतलब देयर वाज नो ट्रांसपेरेंसी, एंड द फैक्ट इज दैट this thing can happen at any point of time at any scale is scary to me कि किसी के बोलने पर, किसी के कुछ करने पर वेबसाइट मतलब बंद हो गया एंड स्टफ लाइक दैट विद नो मतलब पहले बंद फिर देखा जाएगा, you have to appeal or you have to work it out or you have to see there is no procedure, there is no process involved, there is no checking about the people who are using that site. I mean I laughed about it, but I think this is how maybe people of TikTok felt when TikTok got banned, right? I mean, TikTok वाले तो बहुत खुश थे. I mean, we were making fun of it, but वो लोग तो अपने में खुश थे. So I think उसमें थोड़ा मेरे को समझ में आया कि we are not very different from TikTok, since Steam users. हम लोग भी नाच रहे, कोई और नचा रहा है, हम लोग भी नाच रहे. हम गेमिंग के टिकटॉकर्स हैं. Yeah, gaming के टिकटॉकर्स हैं. So it is a little worrying on that sense that something like this can happen. I just hope things like bans and stuff like that, or is just more processed in a more public platform rather than trying to do something like this. I hope this was a mistake. A one-off mistake where ISP jumped the gun and maybe misunderstood or some context regarding something else. But even then it's interesting na ki steamcommunity.com was a URL sent to them to maybe block or do whatever with, right? Like why have that? Steam community has a marketplace. Itna pata hai, like you can buy and sell things, but you cannot gamble. Yeah, you cannot gamble on Steam. You cannot bet. You call loot box gambling. I mean, yeah, but you cannot. Steam is a platform where you could buy loot boxes and you can buy the thing to open it, but it's not like pushing gambling, right? It's a marketplace. Facebook is a marketplace, like it has a marketplace in it. So Steam is also a marketplace where you buy a product and you can also buy like microtransactions for it. The issue is ki, like I remember when they were talking about banning like online games of chance or whatever, right? They talked ki what will come under these online games. Like there was no clarity between gambling games, ye betting wale apps, and games of chance wale games, and actual like video games, right? Because there is a difference. Like they classify games as wo rummy wagera and those fantasy games and all, and also video games under it, which is there are two very distinct things going on. So I hope like
whatever they're talking about, like we read, like I think last month, they're thinking of, oh, they want to put a time limit on playing games. They want to like ban games that are addictive and all of that. Which तुम बोल तो रहे हो, but what are the criteria for it? Like nobody knows. BGMI got banned, like it was just banned. Nobody knew why, what happened. People who made the game also were like struggling to figure out kya ho raha hai and like what to do. So I like, the president has been said ki it's going to just do it first and ask questions later, which is sad, because then we will lose, like if they end up doing that, massive industry that's now like being looked at globally like will go down. Like I literally globally, like Sony is looking at India for like indie games and all. The rest of the world is looking at India because it's a growing market, and if this happens, it will immediately like stop that. So not just like gamers will be affected, people whose jobs are there in this industry will get Right. affected. Like a whole Right. ecosystem will go down. Right. Because you can see that in like really good mobile games, like there is FIFA Mobile, which is going on. In any other game that people are playing on the consoles, people do play a lot of FIFA over there too, and stuff like that. What I feel is that I don't fashion myself to be a political observer of in any manner in that sense, but I do want to say that the ease of doing business ka index, India is ranking quite low because of the fact that such a regulation is happening on a scale that companies are not being able to wrap their heads around, and suddenly trying to ban. Aaj thoda scare hua, thing got resolved, and hopefully water under the bridge. But things like this which can happen, like जो हम लोग मजाक उड़ाते हैं, आज चाइना में होता है and stuff like that kind of thing happening in India is not a good thing. I don't think it's a good idea to blanket ban without understanding the context for it, without classifying what they're going to ban clearly, without having a complete understanding from the people who are part of the market. And here I want to say that वो हम लोग का बहुत सारे gaming conferences होते हैं and stuff like that, and I heard again, I mean, it's hearsay. The last one was dominated by crypto people, and they were very less, gamers in that sense, or game companies in that sense, or developers being given the, way regarding that. So I hope even the conversation regarding what is what needs to be classified as what doesn't, is it not dominated by people like, I mean, can I name names? वो जो मोबाइल पे खेलते हैं आदमी लोग टीम मीम्स बनाने का, मैं नहीं जानता कोई नाम, फैंटेसी, जैसे फैंटेसी क्रिटिक लीग, ठीक है, वैसा जैसे हम लोग का फैंटेसी क्रिटिक लीग, वैसे आदमी लोग भी टीम्स बनाते हैं क्रिकेट के, वो इन अ गेम ऑफ चांस बेसिकली, वेयर यू डोंट कंट्रोल द आउटकम, यू आर पुटिंग इन रियल मनी in some way or form, and you are like playing a game of chance where you don't even know the odds, right? And then you either lose real money or you win real money, right? Which is like one of the biggest things in India. Like three of us might not be into it, but I have seen firsthand like the number of people who are using these apps and like putting money and going into debt because of it. Oh, right? Yes, absolutely. Yeah. So like those things obviously need to be regulated and taken a look at, but those are not video games, which is what they are pulling it into, sadly. Yeah. I think Manas, from your end, what do you think? नहीं, I think सुशीर ने जो भी बोला वही, I hope this was not even a mistake, a full क्योंकि mistake, misunderstanding, like all of it leaves room for कि ऐसा कोई directive आया था, अभी implement नहीं करना था, like ऐसा कुछ हो, like why is any thought being put in like blocking Steam वाले direction? Gambling के against rules and all I understand, but this like, but yeah, I was so scared from it. I was like, अरे मेरे पास तो PS5 तक नहीं है मैं तो इसकी बहुत बड़ा ही कर रहा था, और अभी आयुष आएगा मजाक उड़ाने मेरा, खेलो और PC पे and stuff like that, and I'm like, नहीं, oh but my I guess God. Steam तो would be the first step then, no? Other platforms will also get blocked, like PS, everything. अगर ऐसा कुछ now, it's नहीं होगा. You and I have a little machine made by Steam. क्या होगा उसका without Steam in India? छीन लेंगे आके, ले जाएंगे घर आके से हमारे Steam Deck. My God. मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जय के पास भी है, हमारे छीन रहे हो तो जय का भी ले लेना प्लीज, अगर कोई देख रहा है वीडियो तो. केरला में नहीं होगा ना. राइट.